Hi everyone. In today's class, we are going to continue the chapter Locomotion and Movement. In previous section, we have studied about the muscle, three types of muscle, that is skeletal muscle, visceral muscle, and your cardiac muscle. Now in today's class we are going to study about the all structures present in your NCERT. So we are going to start with the structure of the skeletal muscle. If you remember, skeletal muscle is a mesodermal origin and skeletal muscle is the voluntary structure. Now we are going to study skeletal means bone, right? So these are the muscles which are attached to the bone. So here you can see I have drawn a bone, and this whole thing is your muscle. This whole thing is your muscle. Okay, now this muscle and your bone is connected with something. Now if you remember, in the first class I asked you, bone is connected to muscle through what? It is connected through tendons. Okay, let me just write it. One second. So, bone is connected to muscle through tendons. Write it in the comment section. What connects bone to bone? So bone to muscle is your tendons, and bone to bone, what connects bone to bone? Okay, now let's jump here. So bone is connected to muscle through tendons, which is uh, what? Write in the comment section. Is it a dense regular connective tissue or dense irregular connective tissue? Write in the comment section. Okay, let's come here. So this whole is your skeletal muscle. Now we know that, if you remember, that most abundant tissue in your body is the connective tissue. Most abundant tissue in your body is the connective tissue. So here always the packaging is done by the connective tissue. So here, if this whole is your muscle, obviously this must be having the covering, right? So the covering of this, we call it as epimysium. The covering of skeletal muscle. The covering of skeletal muscle, what do we call it as? Epimysium. So what is epimysium? It is nothing but the connective tissue. It is nothing but the connective tissue. Okay. Let me just check if I have written somewhere. No, I'm not written, but it is a connective tissue. Oh, I have written over here. So, skeletal muscle is connected by a my bad. Skeletal muscle is covered by a connective tissue, and that connective tissue we call it as epimysium. Epi means upon, mysium means muscle. So, the outermost covering of the muscle, skeletal muscle, we call it as epimysium. Now, if let's imagine I have taken a muscle like this, let me cut like this. So, if you'll cut it, obviously you will see the circular inner part. So this is the inner part. When I did the cross section, when I took a cross section of a muscle, this is the cross section. So inside, this is the whole muscle ka covering, we call it as epimysium. Inside the muscle, what you will have a muscle bundle. Okay, you will have a muscle bundle. Fascicle and muscle, it should be muscle bundle. Correct it, it should be muscle bundle. Okay, or in simple language, if I'll talk about it, it is nothing but the bundle of muscle fiber. It is, I wrote it over here. So fascicle is nothing but, it is also called it as a muscle bundle. तो आपने क्या देखा? Skeletal muscle लिया. Skeletal muscle की covering क्या थी? Epimysium थी. When you'll cut the skeletal muscle, inside what will be present? You will see the bundle of muscle fiber, that we call it as muscle bundle. So what is, अब इसकी भी कुछ covering होगी obviously, right? So this pink color covering which you can see, this pink color covering is nothing but your पेरीमाइसियम. ये पूरा जो है दैट इज नथिंग बट योर fascicles. ठीक है, इस fascicle की कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट वी कॉल इट एज पेरीमाइसियम. माइसियम मींस मसल, पेरी मींस अराउंड, अपर मोस्ट इज एपीमाइसियम, अराउंड वाली इज द मिडिल वन, दैट इज पेरीमाइसियम. fascicle और मसल बंडल के अराउंड में है. हाउ मेनी fascicles will be present? Many fascicles will be present. And in between these fascicles, can you see this blue color one thing? These fascicles, these in between structures are also a connective tissue, we call it as fascia. किसकी होती है? collagenous connective tissue. Very 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 important PYQ. collagenous connective tissue होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? fascia. Okay, don't get confused between fascicles and fascia. Fascia will be present in between the fascicles to hold the fascicles at its own position. Fascia will be present. ठीक है ना? Then it contains muscle fiber. Obviously fascicle है क्या? Muscle bundle है, that is bundle of
मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर. सो मसल फाइबर की बंडल है तो क्या करे, क्या कंसिस्ट करेगा? ऑब्वियसली इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ दी मसल फाइबर, राइट? now now if you will see inside the fascicle, can you see another this circle, another circle? So this मैंने क्या बोला? Fascicle was the bundle of muscle fiber. तो अगर मैं bundle of pencil लूं, just let's imagine this is the bundle of the whole bundle of pencil, तो इसमें से एक निकालूंगी तो एक pencil निकलेगा ना, the one pencil will come out, then this is another pencil, this is another pencil. So this whole is bundle of muscle fiber. Let me erase it, one second. Now, this whole is bundle of muscle fiber. This whole is bundle of muscle fiber. This whole circle is the bundle of muscle fiber. तो bundle of muscle fiber के अंदर तुम्हें क्या ही मिलेगा? Obviously muscle मिलेगा. So this is one muscle fiber. This is another muscle fiber. This is another muscle fiber. Another muscle fiber. अब ये भी muscle fiber है तो इसकी भी surrounding होगी obviously connective tissue की. So इसकी surrounding को what do we call it as? Endomysium. अब मैं एक muscle fiber निकाल देती हूँ. तो एक मसल फाइबर को आप देखोगे क्या होता है, एक मसल फाइबर की सराउंडिंग को मैंने क्या बोल दिया? एंडोमाइसियम. Endomysium. Now, this one muscle fiber is made up of many myofibrils. Okay, many myofibrils. ये जो पूरा है ना, this whole is your one myofibril. इस myofibril के अंदर can you see a structure like this will be present? मैं एक मिनट erase करके let me make it again. So see here, this, one second. This whole is your myofibril. This is one myofibril. Okay. Now, in this one myofibril, you have many myofilament. So, how myofilament will be there? Let me just draw it once. So, this is how it will be. Uh, see, dark band, light band, light band, light band, light band, again dark band, light band, light band. So let's assume this is one myofilament. Same way, dark band, light band, light band, light band, light band, dark band, light band, light band. So कहने का मतलब ये है कि one myofibril will have many dark band and light band. उसको हम क्या बोल देते हैं? Myofilament. See here. So this is basically your dark band which is thick, and this is your light band, light band, light band, light band. So one dark band, and then surrounding to it light bands will be present, light bands will be present. ठीक है? So what does this myofilament consist of? So this dark band we call it as myosin, which is thick, and these light band we call it as actin. These light band we call it as actin. वापस से एक बार पढ़ लेते हैं. क्या बताया तुम्हें? मसल फाइबर बता दिया, एंडोमाइसियम. नाउ लेट्स कम टू द मायोफाइब्रिल. क्या बताया? वापस से एक बार बता देती हूँ. सो फर्स्ट वन क्या है? स्केलेटल मसल है. स्केलेटल मसल की कवरिंग को हम बोल देते हैं एपिमाइसियम, विच इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू. उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? फेसिकल्स, और वी कॉल इट एज मसल बंडल. इट्स कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम. मसल बंडल के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? मसल फाइबर. इट्स कवरिंग इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम. ये भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू की ही लेयर होती है. एंड मेनी मसल फाइबर्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है ना? मसल फाइबर कितने होते हैं? मेनी होते हैं, राइट? नाउ मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल. ये मायोफाइब्रिल है तुम्हारा. मायोफाइब्रिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर. दैट मींस मसल फाइबर में क्या होगा ही होगा? मायोफाइब्रिल. क्यों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल. इट इज अरेंज्ड पैरेलली. कैन यू सी पैरेलल अरेंजमेंट है? ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. दीज आर दी पैरेलल अरेंजमेंट. दिस इज अरेंज्ड पैरेलली and parallelly arranged filaments where it is present in the cytoplasm of the muscle. Cytoplasm of the muscle को हम क्या बोल देते हैं? Sarcoplasm. What do we call it as? Sarcoplasm. How many myofibrils will be present in one skeletal muscle? Many will be present. A single myofibril is made up of two type of myofilament. What are the two type of myofilament? One is your myofilament consists of two types of protein, that is nothing but your actin and myosin. It has, and what is myofilament? Actually, if I want to tell, it is nothing but the dark and light band की जो appearance हो रही है, this whole is called as myofilament. ठीक है? So मैं बोलूँ myofilament and myofibril. As per NCERT दोनों same दिया हुआ है, myofilament slash myofibril उन्होंने लिखा हुआ है. But actually, if you want to go in detail, myofibril is made up of many myofilament. And myofilament
क्या होते हैं? These are nothing but the structure which consists of the protein, actin and myosin, which gives a dark and light band appearance. That is the striation. याद आ रहा है? Prominent striation will be there in the skeletal muscle. Due to what? Due to protein, actin and myosin. This was whole about the structure of muscle. So यहाँ पे हम देखेंगे this is very important PYQ. This whole structure is very important. तो हमने कहाँ से शुरू किया था? The sequence you have to remember. ठीक है ना? कहाँ से शुरू किया था? Skeletal muscle के अंदर what will be present? Bundle of muscle fiber. Bundle of muscle fiber के अंदर muscle fiber will be present. Muscle fiber is made up of myofibril. Myofibril consists of myofilament. अगर नीचे से जाना चाहते हैं, so your actin and myosin forms the myofilament. बहुत सारे myofilament will make one myofibril. बहुत सारे myofibril will make one muscle fiber. बहुत सारे muscle fiber will make one muscle bundle, and many muscle bundle will form a skeletal muscle. And is fascia fascicle के बीच में what will be present? Your fascia will be present, and this is the collagenous connective tissue. ठीक है, to hold the fascicles. This was whole about the structure of the muscle fiber. Now अब मैंने my bad, structure of the muscle, पूरा skeletal muscle का structure बता दिया. अब skeletal muscle के अंदर हमने क्या पढ़ा था? Muscle bundle के अंदर हमने क्या पढ़ा था? Muscle fiber. So let's study about the structure of the muscle fiber. The एक muscle cell का structure कैसा होता है वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so here you can see, ये NCERT में दिया नहीं हुआ है. This whole structure, this structure is given in the NCERT. Let me mark it. Where is my pen? This structure is given in the NCERT. So this you have to study. But better way is to study this structure, because इसमें आपको clarity मिल जाएगी. Because terms are given in the NCERT, but the diagram is not given. So जब तक term नहीं समझोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा the whole mechanism. So this is basically ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है, this whole structure, ये pink color से जो बाहर से पूरा दिख रहा है, this is nothing but your one muscle fiber. एक muscle fiber बनाई है मैंने आपकी. ठीक है, now obviously muscle fiber है तो आपकी outer most layer आपकी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड मैंने मसल फाइबर, इफ यू रिमेंबर, स्केलेटल मसल का आउटर कवरिंग इज एपिमाइसियम. स्केलेटल मसल के अंदर फेसिकल था, फेसिकल का कवरिंग इज योर पेरीमाइसियम. फेसिकल के अंदर क्या है तुम्हारा? मसल फाइबर के आउटर कवरिंग क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की एंडोमाइसियम. ठीक है, अब मसल फाइबर क्या है? एक मसल सेल ही है, ऑब्वियसली सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस ब्लू कलर वन, लेट मी जस्ट change the color. Okay, this blue color one, if you can see this blue color one, where you can see the folding also. So this blue color one is called as the plasma membrane of the muscle fiber. We call it as sarcolemma. Plasma membrane of the muscle fiber have a specific name. We call it as sarcolemma. So it lines the muscle fiber. Obviously outer lining तुम्हारी plasma membrane की बनती है, and it encloses what? Cytoplasm of the sarcoplasm. Cytoplasm of the muscle fiber जिसको हम क्या बोल देते हैं? Sarcoplasm बोल देते हैं. ठीक है, now you can see the infolding of the plasma membrane. याद आ रहा है हमने small intestine में भी microvilli पढ़े थे, that is folding of the plasma membrane to increase the surface area. So यहाँ पे भी इस तरीके की infolding होती है. इस infolding को what do we call it as? T tubules. T का full form क्या होता है? Transverse tubules. ठीक है, अब ये transverse tubule क्यों बोले गए हैं? Transverse tubule क्यों दिखाया गया है यहाँ पे? Because it is going to spread the action potential. but ये है क्या पहले वो देख लो. मैंने क्या बताया? Plasma membrane we call it as sarcolemma. यही sarcolemma is going to infold, invagination of the plasma membrane को हम क्या बोल देते हैं? Transverse T tubule. These are tightly associated with the cisternae of SR. क्या होता है ये भी बताऊंगे. ठीक है, अभी इसे छोड़ दो. Then spread action potential. Action potential आप लोगों ने अगर nervous system पढ़ लिया है तो पता होगा, नहीं पता है तो अभी बस इतना समझ लो कि generation of impulse, that is positive negative का transportation. ठीक है, impulse generation, ions की generation, positive negative difference, potential difference होता है तुम्हारा, action potential होता है, वो सब तुम डिटेल में नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे. तो अभी ना यहाँ पे
तुम्हारा डीपोलराइजेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड में पढ़ा ना डीपोलराइजेशन, तो वो डीपोलराइजेशन को पास करना है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो किसके थ्रू पास कर रहा है? टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास कर रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट एंड इजी टू स्प्रेड द एक्शन पोटेंशियल। सो अंदर माइनस हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इफ यू रिमेंबर द डीपोलराइजेशन। ठीक है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ दी मसल को हम क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं होता है, स्मूथ होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, देन तुम्हारा यही बताया कि दिस कैल्शियम एक्चुअली इट विल बी इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी पूरी साइकिल हम पढ़ेंगे। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आता है ना, वैसे ही कैल्शियम का रिलीज होगा फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सो ये एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हो रहा है, वैसे ही इट गिव्स द सिग्नल टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए दीज टी ट्यूब्यूल्स, यही चीज लिखा हुआ है, टाइटली एसोसिएट विद द सिस्टर्ने। ये जो दिख रहा है तुम्हें, दिस वन, दिस वी कॉल इट एज सिस्टर्ने, टर्मिनल सिस्टर्ने। सो तुम्हारा ये टाइटली अटैच रहता है इसके साथ। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आता है, इट गिव्स अ सिग्नल एंड इमीडिएटली कैल्शियम बाहर आने लग जाता है। ठीक है, ये तुम बाद में डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिस्टर्ने लिखा है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टर्मिनल सिस्टर्ने ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ डायलेटेड वन। ये दिख रहा है, बड़ा सा है, डायलेटेड वन, एंड इट रिलीजेस द कैल्शियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये अभी नहीं समझ आएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब तुम पूछोगे मैम ये टर्मिनल सिस्टर्ने क्या होता है। So it is important for you to remember the structure. So this is about the terminal cisternae. ठीक है, then यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे endoplasmic reticulum में some channels will be present, calcium releasing channels. So ये जो channels दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ से क्या रिलीज होता है? कैल्शियम रिलीज होता है बाहर। ठीक है, एंड दिस ये जो पंप दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। दैट मीन्स यहाँ से तुम्हें कैल्शियम अंदर पंप हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर हो रही है, दैट इज इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद सेल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हाउ मेनी न्यूक्लियस? इफ यू रिमेंबर पेरिफेरी पे मेनी न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट। तो सेंसेशियम कंडीशन है, दैट इज पीवाईक्यू तुम्हारा। ठीक है, देन यहाँ पे सर्टेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम्हें याद आ रहा है, मैंने एक्टिन एंड मायोसिन पढ़ाया। सो दिस होल इज योर वन मायोफिलामेंट, वन मायोफाइब्रिल। ये पूरा वन मायोफाइब्रिल है। उसमें ये वन मायोफिलामेंट हो गया, ये वन मायोफिलामेंट हो गया, ये वन मायोफिलामेंट हो गया, ये वन मायोफिलामेंट हो गया। और मायोफिलामेंट किससे बना हुआ है? एक्टिन एंड मायोसिन से बना हुआ है, एक्टिन एंड मायोसिन से बना हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये मायोफाइब्रिल को कनेक्ट कर रखा रखा हुआ है। सी दिस मायोफाइब्रिल इज नॉट लूजली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, सो ये टाइटली बाउंडेड है किससे? एक प्रोटीन से, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्राउन, सॉरी, मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन पे अनदर प्रोटीन लगी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रोफिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम डिसऑर्डर में पढ़ोगे। ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन विच कनेक्ट्स मायोफाइब्रिल स्पेशली एक्टिन टू द सार्कोलेमा। तो अगर ये डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या तुम्हारी एक्टिन अटैच रहेगी प्रॉपर्ली विद द सार्कोलेमा? नहीं रहेगी। सो इट कॉजेज अ डिसऑर्डर, जो तुम बाद में पढ़ोगे। देन ऑब्वियसली मसल है, एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया विल बी प्रेजेंट, एंड इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसे? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? मायोग्लोबिन में। सो द स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर, दिस वन वी कॉल इट एज मायोग्लोबिन। रेड कलर प्रोटीन पिगमेंट होता है, जिसके अंदर वन मायोग्लोबिन बाइंड्स टू ओनली वन ऑक्सीजन। ठीक है, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। सो अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एंड मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीजन किसको जाके लगेगा? पहले मायोग्लोबिन को, बिकॉज मायोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी देन दी हीमोग्लोबिन। It has only one heme group, that's why only one oxygen will bind. And कितना polypeptide है? Only one. Wherein hemoglobin में याद आ रहा है, it has four heme group and four polypeptide chains will be present, right? And then you have a glycogen granules will be present in order to store the glucose, so that whenever it is required, you will break the glucose and form the energy. This is the diagram of NCERT, which says that this whole is the muscle. मसल के बाहर वाले मसल है, मसल के अंदर तुम्हें क्या बोल रहे हैं? ये पूरा फेसिकल है। फेसिकल के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं? सार्कोलेमा। एंड यू विल सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इनसाइड दिस। ठीक है,
That's all about the structure. Now, with respect to IPE, there is very important term, 2 marks question हमेशा आता है तेलंगाना IPE से. That is what is triad. T tubule plus two terminal cisternae. So यहाँ पे let me first erase it once. 1 second. Yeah. Hmm. So what is triad? Let me just write it once. This is triad. This is, oh my bad. I have written it now. 1 second. This is triad. This whole is triad. What is triad? One terminal cisternae, another terminal cisternae, along with the T tubule, we call it as triad. Very, very, very important with respect to the IPE, not given in the NCERT. Then dystrophin protein, some extra knowledge I have given you in order to understand the disorder which you will study in this chapter. So dystrophin protein basically it stabilizes the sarcolemma during the muscle contraction. Without it, the force of contraction would cause micro tear in the cell membrane and leading to the muscle degeneration. आप ये muscle contraction में better समझोगे. So basically, when the muscle, if I'm lifting my hand, that means contraction हो रही है immediately. ठीक है? So वो contraction कैसे हो रही है? Due to actin and myosin. And this actin and myosin में especially actin की बात करूँ, so actin is attached to this protein dystrophin. So this is going to stabilize this whole structure. So this will help in the contraction, proper contraction. अगर ये dystrophin नहीं है, तो this is attached to the ultimately attached to the sarcolemma. Ultimately, what will happen? There will be a micro tear in the cell membrane, that is the sarcolemma, and muscle degeneration हो जाती है इसकी वजह से. So dystrophin play very, very, very important role. Now, so we are done with the structure of skeletal muscle. We are done with the structure of your muscle fiber. Now, the next structure is your structure of myofilament. I think this we can do it in the next class. Okay, so the structure of myofilament and structure of contractile protein, we will do it in the next class. Otherwise, the video will become longer. Thank you, everyone.